Yes, you can begin. Your voice is not coming. Okay, my voice is coming now. Yeah. Okay. So good evening, जय जैन to all of you. आज हम सभी एकत्रित हुए हैं एक साथ बहुत ही सुंदर चर्चा को सुनने के लिए, जो कि हमारे जीवन से रिलेटेड है। और सबसे बड़ी बात ये है कि भगवान महावीर का जो मूल सिद्धांत है अहिंसा, उसको लेते हुए आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे। हमारे एक वक्त्री और एक वक्ता बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान हैं, दोनों अपने अपने विषय में। उनके माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद पर कि हमारे जीवन में कि हमारे जीवन में किस तरीके से हम अपना स्वयं के चिकित्सक बन सकते हैं, किस तरीके से हम अहिंसा को अपना कर अपना इलाज कर सकते हैं, या ऐसी चीज की बीमारी हो ही ना और अहिंसक तौर तरीके से हम सभी अपना जीवन यापन करें। केवल इस दृष्टि को मद्देनजर रखते हुए आज हमारी चर्चा होगी। आज हमारे बीच में दो वक्ता हैं, एक वक्ता और एक वक्त्री। तो मैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे बीच में आएंगी कोमल जी शाह। वो नैरोबी केन्या से हैं और न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम यूके से, और योगा थेरेपिस्ट हैं स्वामी विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी बेंगलोर से, और एक क्वालिफाइड नेचुरोपैथिक डॉक्टर हैं फ्रॉम गोरखपुर स्कूल ऑफ नेचुरल थेरेपेटिक्स। और उसके बाद बहुत सारी आपकी क्वालिफिकेशंस हैं। पर्सनली मैं कनेक्टेड हूँ आपसे लगभग 1.5 साल से। धर्म के क्षेत्र में भी आपका बहुत इंटरेस्ट है और आप क्लासेस लेते हैं रेगुलरली। और उनकी क्लिनिक है हेल्थ इन योर हैंड, मतलब नाम ही इतना अच्छा है कि आपकी हेल्थ अपने हाथ में। तो पिछले 14 साल से वो नैरोबी में ये क्लिनिक रन कर रहे हैं। और शी हैड her own yoga breathing show on East FM Kenya's local radio station। एंड सबसे ज्यादा जरूरी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो फाउंडर हैं वीर कुंद कुंद कहान जैन यूथ एसोसिएशन केन्या, और शी इज अ जैन टीचर, और बहुत अच्छी तरीके से वो हमें विषय को समझाएंगे। इस तरीके से मैंने कोमल जी का परिचय आपके साथ साझा किया। और दूसरे और हमारे साथ वक्ता जुड़े हुए हैं डॉक्टर दीपक जी वैद्य। मैं पर्सनली भी जानता हूँ आदरणीय दीपक जी भाई साहब, उन्होंने मुझे भी पढ़ाया हुआ है। गोमट सार कर्मकांड के आप अध्यापन करते हैं टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर में। और आज के विषय के हिसाब से यदि मैं आपका परिचय दूं, आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, लेखक हैं, और आपने जैनिज्म में पीएचडी भी की है। और आदरणीय दीपक जी भाई साहब अपना क्लिनिक के माध्यम से और बहुत सारी आपने एक किताब लिखी है वर्तमान में जीव दया पालन। तो भगवान महावीर के सिद्धांतों को लेते हुए आपने एक किताब लिखी, और लगभग 25 साल से आप आयुर्वेदिक फील्ड में काम कर रहे हैं। और जब 25 साल कंप्लीट होने पर आपको चिकित्सा भूषण का भी अवार्ड दिया गया, और आपको वैद्य शिरोमणि नाम का भी अवार्ड दिया गया आयुर्वेद में अपने 30 साल कंप्लीट करने पर। और भी इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं आपकी कि शायद जितना बताते जाएंगे वो सूर्य को दीपक दिखाना ही होगा। और इस तरीके से दीपक जी का परिचय है। गोमट सार के आप अध्यापक रहे हैं, 13 साल से लगभग आप विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं। अहिंसा आहार स्वास्थ्य का आधार, अहिंसक स्वस्थ जीवन, इस पर आपको वैद्य रत्न का पुरस्कार मिला है। इस तरीके से आप जिन स्पीकर्स को सुनने वाले हैं वो छोटे मोटे नहीं, वो बहुत बड़े और अपनी फील्ड में एक्सपर्ट जो भी हमारे स्पीकर्स हैं उनको हम सुनने वाले हैं। चलिए मैं प्रारंभ करता हूं, और मैं सबसे पहले आवाज देता हूं कोमल जी को कि वे आज के संबंध में अपने विचार व्यक्त करें, और उसके बाद हम आदरणीय दीपक जी भाई साहब को भी सुनेंगे। अभी मैं आवाज देता हूं न्यूट्रिशनिस्ट, योगा थेरेपिस्ट, नेचुरोपैथ और जैन टीचर कोमल जी शाह। Hey Jinendra, as you all know, my name is Komal, and tonight we want to bring to you the essence of Jain philosophy, that it is highly scientific, number one. Number two, that we do not need medication.
I repeat, we do not need medication. I personally have never, or like I personally haven't taken medication in the last 20 to 25 years. And I want to tell you my own experience with scientific facts. Alongside with Dr. Deepak, will be also be sharing from our Shastras what Acharya Bhagwan has written, which is highly useful for us in our day-to-day life to keep our mind and body healthy. Because obviously the essence of Jainism is not to look after the body, but the body is only a tool so that we can attain moksha or experience the soul. So this is a very important concept that we need to bring forward, that our Jain Shastras are not for the elderly, they're not for time pass, but rather they are there to guide us in any stage of life, be it young or old, and they are highly scientific. The reason why that they're scientific is that Acharya Bhagwan has looked within the soul, and the soul is filled with infinite knowledge, and that's where they've written these like shastras from, and they're highly beneficial if we understand what they're trying to tell us. Now let's begin. Point number one, what they want to bring forward is not necessarily the health of the body, but more importantly, the non-violent concept, so that we don't build any extra karma or we don't go to a lower gati. Lower gati are only two. One is narak gati and one is animal. Because when we go to Varg or when we become like Manushya, it is still a better gati. However, it is only in the Manushya gati that one can become a Muniraj and go to moksha. Now let's bring our focus back to the body. How can we look after this body? Keeping in mind that it is matter particles. If you are on unmute, please mute yourself. So bearing in mind that the body is matter particles, it looks after itself. However, what guidelines have been given to us? The principles in Jain philosophy are universal laws. Remember, they're universal laws. They are not for or written by one acharya, rather they have been existing since infinite time. So we will touch on a couple of these universal laws which help any human being and which are highly beneficial. The first concept is of the organ clock, very, very important. As some of you might know, or some of you might not know, that in the fourth era, at the moment we're in the fifth era, in the fourth era, people only used to eat once in a day. People only used to eat once in a day. Now, what is happening in the fifth era? We're maybe eating 5 times in a day. So we're actually damaging our entire system by overeating. We might be eating healthy, but that doesn't matter because we are overeating. The fact is that a human being, after the age of maybe 8 years old, just needs 1 meal a day, only 1 meal a day. Let us understand the whole like scientific reasoning behind this. Like a clock on the wall, the organs even have a specific timing when they're functioning, when they're working, and when they're not working. Very important, when they're not working. So when we are feeding the body, when it is not in a state to digest, it is being negatively used or like negatively stored in the body. So if you look at the large intestine, between 5 to 7 in the morning, it is active. When you look at the small intestine between 1 and 3 p.m., it is active. It is saying that that lunch should be consumed, say, by 12 o'clock or by 1 o'clock. Now, remember, this is in theory because everybody's work situation might be different. It might be easier for somebody who is at home and they can consume this meal in this period of time. However, the concept only to understand is that lunch is supposed to be your biggest meal of the day, as compared to popular belief which states that eat breakfast like a king. The whole theory is incorrect when you look at the organ clock. Remember, nobody has invented the organ clock, no scientist or no doctor. It has been existing since infinite years.
And this is how the body is working by itself. So when you say eat breakfast like a king, it is incorrect. Now let us understand why this is incorrect. Break the two words, break and fast. You're breaking a fast. You're breaking a fast. This means that when you take food early in the morning, be it 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, whenever you take food, what is happening? The body was fasting overnight. And suddenly you bombard it with cereals. Cereals can be like in the Western concept, it can be cornflakes, Weetabix, any other like sort of like cereals. And maybe in India, people might be eating upma, idli, etc. So you're bombarding in the morning with cereals. And when you do this, what happens is the body is not ready yet. So for a perfectly healthy person, they should only be taking water till about 10 o'clock at night. Till about 10 o'clock in the morning. Till about 10 o'clock in the morning, you should only be consuming water. After that, if you want to have a little bit to eat, or even before that, if you want to have a little bit to eat, it is okay. It is not a problem, but don't consume a very big breakfast, because this is a Western philosophy, which honestly has got no scientific base when you actually think about it, because the body functions on the organ clock. It actually functions like this. Now, when you look at our Muniraj, the first meal he will take is at about 10 o'clock in the morning. After that, he will not eat. So again, he's following these concepts himself, and then he's also writing it for us. And the reasoning, the scientific reasoning is that the small intestine is active between 1 and 3 p.m. So if you eat your meal anytime between, say, like 1 o'clock, anytime before 1 o'clock, it's okay. And for some of you, it might not be possible to eat, like before 1 o'clock. But the concept for you to only understand is that lunch is supposed to be the biggest meal of the day. Now let's dive a little bit deeper into lunch. When you combine foods, again, this is according to our Shastra. When you combine foods, for example, when you take yogurt with some form of protein like dahi, and when you take gram flour, which is like chana nolot, in like Hindi, what is it called? I'm not quite sure. Besan ka flour. Yeah. So if you combine the two, what is stated in our shastras is that this causes a chemical reaction, which is a true fact. And what happens? Germs are produced in the body. 3 cents, 2 cents, germs are actually produced in the body. Maybe millipedes, centipedes, they're actually produced in the body. So this is the reason why we don't combine dahi with any form of a protein flour, because it causes a chemical reaction which is not good. So what do we normally eat like Indians? Kadhi. Instead of making it with besan ka atta, try to make it with rice flour, because rice flour is far more healthier and even the taste is not compromised. What else do we eat? We eat like dahi vada. So dahi vada, again, you can make of suji for those of you who eat. For those of you who don't eat, maybe, I'm not sure if there's any other option. But if you want to eat, this is a better option, because these are the items that we normally eat. If you are taking, say, for example, like khichdi with dahi, this is a bad combination, very bad combination, because it is producing germs in the body. If you're taking chash with like papar, so again, papar is made out of arad lot. So again, this is not a good combination. Papri, or maybe a papar made out of rice flour, is a good combination when you're eating it with chash. Or the other option is, if you like the taste of these other papar, what you can do, first clean your mouth, because it is the saliva, it is actually the saliva which is the problem. And once the mouth is clean, once you have washed out the mouth, and then if you take either papar or chash, then the two will not combine. And when the two don't combine, this is when we don't get a chemical reaction in the body, and germs will not be produced.
So these are the small like mistakes that we're making on a daily basis, and then it comes to a point where the liver, the digestive system starts to give up, and we start to get major diseases. It could be cancer, it could be diabetes, it could be blood pressure, it could be cholesterol, it could be arthritis, because arthritis, like what is it? Excessive acid in the body. And when there's excessive acid, it is produced by these germs in the body. What is cancer? Cancer is like a fungus. Fungus is produced because of these germs in the body. So when we blame the external, it is not completely correct. It is the combination of food that we are taking which is actually not suiting the body. So when we blame the weather, or when we blame anything external, that is a secondary factor. That is only a trigger. But the main factor is how we are combining food and at what time are we eating. So we have talked about two things so far. Try to take your biggest meal should be lunch, and avoid combining foods which are actually detrimental for your health, because this is what is causing the problem within, and this is unnecessarily we're taking medication. Now, what are your options if you get acidity? Do you always need to take some form of medication? The first thing that you can do is take some water for it to, pacify. The second thing you can do, if it doesn't work, take a little pinch of soda bicarbonate, a pinch meaning a very small quantity, and take half a glass of water. So this is also very good. You do not need to take these violent medication all the time. For one, it is really, really bad for your liver. Number two, you are building unnecessary karma by taking non-vegetarian form of any form of medication. And the third and most important thing, which is very important, is to fast. If you can fast for a day, 2 days, 3 days, whatever is your capacity, remember, fasting is always a positive thing, and starving is always a negative thing. So the two are different. Fasting is a positive thing which helps to clean the body, clean the mind, maybe even keep quiet if it is possible. It might not be possible for everybody because everyone's situation is different. Work timings are different, but say if you are lucky and if you're just at home, you can even keep quiet so that that energy is not wasted, and rather you focus on the cleaning of your entire body and mind. Now let's move on a little bit on with the organ clock. Between 5 and, like you can say, between 5 to 7 p.m., the kidneys then start to rest. So as you might have known that even water is also written in our scriptures that in the night time, forget about food, but it is also written that even do not consume water. They're not trying to torture us by telling us don't consume water. What they're actually, Acharya Bhagwan is actually trying to help us. Because after 7 p.m., the kidneys are not even at a state to digest water. And maybe in a country like India, where it is very hot, we can easily be, thirsty because of the hot weather, even at night. So now think about it, what is best for you, but this is what Acharya Bhagwan is also like telling us for our own benefit. And then obviously everyone has to make up their own mind that consuming water even after 7 o'clock is not helpful. It is not helpful at all. Because food is obviously not really digesting after 3 p.m. because the small intestine is active between 1 and 3 p.m. After 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, when you take certain foods, like if you take dahi at night or any milk product at night, what is happening is that it is as good as eating poison. Because when you take yogurt or dahi in the morning, it is like golden, you can say. And for lunch, it is like silver. And if you eat after 4 o'clock, 5 o'clock, it is like eating poison. So timing of food is very, very important. We might think that these are good foods, but why is it that we're still having problems? Why is it that, that the digestive system is not able to accommodate it? Because the timing is also very, very important. If you're taking salad, like raw salad, for instance, for like lunch, it is good.
But when you take it after 3, 4 o'clock, again, the digestive flame is not there for us to digest even the salad. So certain foods should not be eaten after 4 o'clock. Now, what are your options? What can you eat for dinner? So in like a Western country, most people have a large meal for dinner. But it's good that still in Kenya and in India, we still have lunch as our bigger meal. So for dinner, the best food, or rather the best dinner, is a no dinner. It is actually a no dinner. But that might not be the best option for everybody, depending on everyone's mind state. So soup is very good. In hot weather, try to consume only and only fruits, then don't mix soup and fruits. What fruits should be eaten when? In the morning for breakfast, citrus fruits are very, very good. They're very good in the morning. For lunch, you can maybe mix. It is not advisable really, but it is okay for lunch if you want to mix, and never mix fruit with sabzi roti or like with shak roti. Don't mix like this, because fruit will not get digested. And if you're consuming fruits only for dinner, only a plate of fruits, try to eat it by 6 o'clock, maybe by 5:30, so that it gets digested well. Mix sweet fruits with sweet fruits in the evening. In the evening, there should be no citric fruits, because again, it causes a problem to the body. Try to eat sweet fruits. It could be like papaya, it could be avocado, it could be sweet melon, or it could be chiku. It could be any of these sweet fruits which are actually helpful for us in the evening time. So this is this is just an overview for a healthy person. And these are in between. I've just put in a few tips because, of course, we cannot share a lot of information in one session. You will even forget it, or you might not be able to like digest everything. So remember what Acharya Bhagwan has told us, that we should be eating certain foods at a certain time. Like for breakfast, the best way is a no breakfast. Because when you even look at Muni Raj, he actually follows this. He by 10 o'clock, he has his lunch, and that's it for the day. So it is a very good idea to have a good lunch. And for dinner, we should try to avoid whatever like dinner. The best way is a no dinner. And if one cannot do that, soup is a good option. And in case even if soup might not be filling, fruits is a good option. But then after that, the mind has to be tamed, because the problem is the mind. The problem is not the body. The problem is actually not the body, but the mind. Everyone's mind is different, and hence everyone's habits are different. Because everybody's body is the same. One heart, one liver, two kidneys. Everyone's body is the same. But the mind is different. We have different thoughts. We have different thoughts. And this is the reason why we cannot tame the mind. Now, how can we tame the mind so that we start following what Acharya Bhagwan has told us? One option is to do yoga nidra before you eat. If you go on YouTube and if you read yoga nidra, it helps you to calm down your mind before you eat. And this will help you slowly. It might not be a day, it might not even be a week. It might take 2 weeks. And for some of you, it might even just take a week. But what happens is that slowly, the mind starts to relax. The minute the mind relaxes, the body will not eat a lot. The other option is that we can do pranayam before we eat. Try and do like nadi shuddhi. Try to do something that helps to tame the mind. Once the mind is tamed, naturally the food habits will be a lot better. My time is almost up. Just to finish off, we have a concept called Atham and Chaudas. Ashtami and Chaudas, Chaturdashi. So Ashtami, Atham and Chaudas, how it works when you look at the scientific principle, because there's a scientific principle to it. Why is it that we don't eat greens on that day? And normally any nutritionist will always say, eat greens, eat greens. There's a scientific reasoning to it. The earth is 70% water. Our body is also 70%
water. And because our body is 70% water, what happens on Atham and Chodas, the level of water naturally rises up, as you might have noticed when you go for a holiday near the ocean. Atham and Chodas, those 2 days, the water quantity in the ocean starts to increase. And like we're always told that don't swim on these 2 days in the ocean. So this is a scientific reason we should not be consuming greens at that time, because we're increasing the water content, and it is actually harmful for us. It is harmful for us to be consuming any forms of greens on Atham and Chodas. And of course, on the other days, we can have them. But try to take, any form of pulses and like lentils on that day. And for those of you, I mean, it might suit you or it might not suit you. So the best way, in case if it is not suiting you, is take it in a soup form. Take a soup form, because for everybody it might not suit, like to like take two meals or maybe one meal. For most people, one meal will be good. One meal will be good. And there's some good news. When you eat lentils, it takes 6 hours to digest. So because it takes 6 hours to digest, what happens is that the stomach is full for 6 hours. So this is a good thing. When you choose yourself to be consuming pulses and lentils on Atham and Chodas, so this is actually very, very good for the body at this time. What is the second reasoning? The second reasoning is Atham and Chodas are actually Shashwat Parva, like we have got Paryushan Parva. These are Shashwat Parva, which comes 4 times in a month, 2 Athams and 2 Chodas. And on this day, try to focus on what is the soul. I am a soul, I'm not a body. Don't give a lot of importance on these 4 days that I am a body, I'm a body, I'm a body. Try to understand what is soul. Try to listen to discourses. Try to understand that this body will not be here, although we are focusing so much on these health issues. This body in 60s, 70s, these days we hear people even dying in their 50s. The body is not going to be here for more than 70, 80 years with us. Then eventually we'll get a new body. So try to focus on Atham and Chodas on these 2 days, that I am a soul. Try to listen to discourses, attend classes in your nearby vicinity. Be like, like Veer Kund Kund Kahan, like Jain Youth Association. We have just started with adult classes on Mondays at 8:15, which all of you are welcome to join. And we're actually teaching what is soul, Atma Tattva Kya Hai. So all of you are welcome to join. And for like those of you who would like to join, you can even like just send me a message and I can send you my email address, and you can of course join the classes. Try to understand, because we are very, very lucky to be born in a Jain family. And remember, as I keep on stressing, that Jain is not for people born in a Jain religion, because these are universal laws. These are universal laws. For example, to make you understand, Jains can be in 4 gatis: Manushya, Tiryanch, Narki, and Swarg, meaning the heavenly beings. The 4 gatis, because one who experiences the soul is actually called a Jain. We are just born in a Jain family, but we are not really Jain until we experience the soul. So it is for anyone and everyone who wishes to understand the soul, because this is Atma Dharma. So to conclude, because we have to finish also on time, because Dr. Deepak even has another session after this. So to conclude, follow the organ clock. Google organ clock. This is very, very important, and it is matching so well with our Jain scriptures. It is actually telling us the essence of Jain scriptures in like a layman's term, the organ clock. Point number 2 is Atham and Chodas. Point number 3, combine your foods properly. Combine your foods properly. Try to combine foods where no like negative chemistry is formed and no germs are formed in the body. We'll have a question and like answer session after Dr. Deepak speaks. For the time being, I hand over to like Dr. Deepak, and he's very insightful in various shastras, and he knows a lot. So I hope everybody benefits. And now I would like to welcome him.
जय जिनेन्द्र सभी को। छोटा सा मंगलाचरण करके हम अपनी बात प्रारंभ करते हैं। पूर्वोपार्जित निज दोषों से जग रोगी है बाल समान। प्रभु आप भव रोग मिटा कर उसे किया निरोग महान। निज हित अहित ज्ञान में शिशु सम सभी जगत के तुम हो वैद्य। औषधि बतलाई अनुपम जो अमोल और अभेद्य। विशापहार स्तोत्र नाम का एक जैन स्तोत्र है और इसमें धनंजय कवि ने ये बीच के छंदों में बताया कि भाई सभी जगत के जन पूर्वोपार्जित दोषों से, भाई हम एक फिलॉसफी मानते हैं कि आत्मा अजर अमर है, भव भव में अपने अपने कर्मों के अनुसार भव भ्रमण करती है। तो इसमें पूर्वोपार्जित दोषों से हमें जगों को रोग होते हैं, लोगों को रोग होते हैं और बालकों के समान फिर वह दुखी होता है। सहनशील व्यक्ति, बड़े व्यक्ति समझदार होते हैं तो वे उस रोग को सहजता से सहन करते हैं और किसी प्रकार से दुखी नहीं होते हैं। और उसमें भी जो आत्मानुभवी व्यक्ति होते हैं वो तो महासुखी रहते हैं, चाहे रोग हो चाहे नहीं हो, अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। तो यहाँ पर पूर्वोपार्जित निज दोषों से ही हम दुखी होते हैं, रोगी होते हैं और बालकों के समान दुख को वेदते हैं। परंतु हे जिनेन्द्र भगवान, जब आपके बताए हुए मार्ग पर हम चलते हैं तो सहज ही जो बताया हुआ मार्ग है आत्मानुभूति का, वीतरागता का और सहज सुख स्वभाव के आश्रय का, तो वह निरोग होता है और भव रोगों से छूट जाता है। भव रोग, भाई जन्म जन्म मरण करना, जन्म मरण करना, ये भव रोग है। तो इससे छूटने का उपाय जैन धर्म में बताया है और इसलिए वह औषधि परम वीतरागता की रूप, आत्मानुभूति रूप आपने जो बताई, उससे हम परमानेंट सुखी हो जाते हैं और सभी प्रकार से दुख दारिद्र्य या दुख टल जाता है। यह विशापहार स्तोत्र की एक छंद को हमने हिंदी में बोला। अब आपका जो कार्यक्रम है, कोमल जी की इच्छा रहती है कि कुछ न कुछ इस तरह के कार्यक्रम होते रहे। पिछले वर्ष भी मैं वर्ल्ड वेजिटेरियन डे पर ही आया था और इन्होंने अपने इस प्रकार के इंग्लिश में खान पान आदि के माध्यम से जैन तत्व ज्ञान को ही जैन चरणानियों को प्रस्तुत किया। मैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक हूं और पिछले साल से, कोरोना काल से ही मैंने एक आयुर्वेद का जैनिज्म के अनुसार कोर्स को डिराइव किया, जिसका सेल्फ आरोग्यम करके हम जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अहिंसक चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की पढ़ाते हैं और काफी उसको सक्सेसफुल रिस्पांस रहा है। और वह कोर्स भी हमने अनेक वैद्यों के सलाह से बनाया है। तो वह सेशन इसके बाद ही होता है, हर संडे को चलता है। तो वह पेड सेशन है, उस पे 3,000 रुपए साल की फीस लेते हैं और उसमें काफी अच्छे से वह जिम्मेदारी से पढ़ाया जाता है। तो हम तो ये बताना चाहते हैं कि हमारे जैनाचार्य आयुर्वेद के ज्ञाता थे, स्वास्थ्य विज्ञान के ज्ञाता थे। देखो ये शरीर है जो, ये हमारा शत्रु भी है और मित्र भी है, अपेक्षा सहित है। इस शरीर से अगर हम तपस्या करते हैं और देह से भिन्न शुद्धात्मा का संवेदन करने के लिए इसको रखते हैं तो यह मित्र है। मंदिर तक कहा गया है इसे, जिन देह देवल में रहे जन मंदिरों में खोजते, हंसी आती है कि मानो सिद्ध भोजन खोजते। जिस प्रकार कोई वेरी रिच पर्सन और भोजन के लिए यहाँ वहां मांगते फिरे, उसी प्रकार स्वयं हम आत्मा स्वभाव से भगवान हैं, परम सुखी तत्व हैं, लेकिन विश्वास नहीं होने के कारण हम यहाँ वहां से सुख खोजते रहें। तो कह रहे कि वह जिस प्रकार कोई अच्छा संपन्न व्यक्ति भीख मांगे, उस प्रकार से यह खोजता है। तो यह देह में विराजमान तत्व है, तो देह की संभाल एक मित्रवत करनी चाहिए, एक मंदिर के समान इसकी रक्षा करनी चाहिए।
इसलिए खान पान से लेके रहन सहन की हमारी पद्धतियां कैसी होनी चाहिए, ये मैं आपको 10 मिनट में बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास में जो शरीर का संयोग मिला है, यह अपने अपने कर्मों के अनुसार, कोई गोरा काला, कोई स्वस्थ रहता है, कोई किसी प्रकार से अस्वस्थ रहता है, अनेक अनेक प्रकार की स्थितियां बनती हैं। इसमें जो वेद विज्ञानी पुरुष हैं, वो तो अप्रभावी रहकर अपने धार्मिक कार्यों को साधते रहते हैं, लेकिन जो अज्ञानी जन है वे दुखी हो जाते हैं और वे इस संसार के संपूर्ण रूप से होने वाले संयोगों में प्रभावित हो जाते हैं। तो इसमें यह है कि देह की रक्षा करने के लिए प्रासूक उपाय अपना सकते हैं, और इसमें भी विशेष रूप से उपाय अपनाने वाले जो हैं वो हमारे जैन श्रावकाचार के पालन से सहज ही हो जाते हैं। जो 8 मूल गुणों का पालन है, और इसमें पूर्ण रूप से मध्यमास, मधु का त्याग और 5 औदुंबर फल जो होते हैं इनका त्याग करा देते हैं। तो ये संपूर्ण रूप से आजकल इनके रूप बदलते जाते हैं। हम जितने भी खान पान की चीजें लेते हैं, इनमें इमल्सिफायर, स्टेबलाइजर और अनेक प्रकार के प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। ये डायरेक्ट मांस के मांसाहारी सोर्सेस से डिराइव हो सकते हैं। इसलिए कोई कहे कि मैं जीवन भर मांस नहीं खाता हूं, सो बात नहीं है। आप अगर कोई भी एलोपैथिक प्रिपरेशंस, न्यूट्रिशनल्स लेते हैं, विटामिन वाले कैप्सूल या गोलियां, कैप्सूल तो स्वयं जिलेटिन है, वो मांस का ही रूप है। और अगर आप कोई मेडिसिनल विटामिन लेते हैं एलोपैथी में, तो ये सब कत्ल खानों से और इनके ऑर्गन्स से, जानवरों के ऑर्गन्स से बने हुए प्रिपरेशन होते हैं। तो इसे भी हमें त्यागना चाहिए। तो आप कहोगे कि भाई फिर इसका अल्टरनेटिव्स क्या है? तो हमारे खाने पीने की चीजों में होते हैं ये सब चीजें, जो इवन विटामिन B12, B6 के लिए कहा जाता है कि एनिमल प्रोडक्ट्स आंतों में ही बनते हैं। तो कह रहे हैं कि भाई वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर जो जितना भी बनने का रहता है, किसी भी प्रकार का कॉम्बिनेशन, ये सब शाकाहारी सोर्सों से हमें मिल जाते हैं। इसलिए इनको खान पान से ही हम संभाल सकते हैं। मैंने तो एक पूरा लेक्चर दिया है जैन आहार पूर्णाहार। हम जो जैन दर्शन के अनुसार कंदमूल आदि छोड़ करके भी और अनेक प्रकार के ये सभी मांसाहारी तत्वों को छोड़कर न्यूट्रिशनल अपना भोजन लेते हैं, इसमें सभी न्यूट्रिशन मिल जाते हैं। मुनिराजों की चर्या से हम आपको उपदेश देते हैं, सजेशंस देते हैं। भाई मुनिराज जो समझ लो कि सनलाइट पूरे बॉडी पे लेते हैं, दैट इज टोटली मैक्सिमम सोर्स ऑफ विटामिन डी, और पूरे बॉडी पे स्किन पे टच होकर के जो सूर्य प्रकाश जाता है, 95% ऑफ अपना जो रिक्वायरमेंट है वो सूर्य प्रकाश से ही पूरा हो जाता है। दूसरा, विटामिन ए के लिए जो आपके प्रिपरेशंस एलोपैथिक आते हैं, ये सब कॉड लिवर ऑयल वगैरह होते हैं, मांसाहारी तत्व होते हैं। अब अपने इसमें घरेलू नुस्खों में या खाने पीने की चीजों में विटामिन ए के लिए जो हरी पत्तीदार सब्जियां वगैरह है, इनमें बहुत अच्छे से मिल जाता है। हम तो सजेशन देते हैं कि भाई अपना जो आम रस है, आम का जूस है, ये वास्तव में विटामिन ए का रिच सोर्स है। इसके इंटरनेशनल यूनिट में 1500 इंटरनेशनल यूनिट के आसपास विटामिन ए मिल जाता है 100 ml आम के रस में। और जब भी आम आवे सीजन में, उस समय बहुत अच्छे से क्वांटिटी में कंज्यूम करें, काफी अच्छे से विटामिन ए मिल जाता है। इसके सिवाय कलरफुल जितने भी फ्रूट्स वगैरह हैं, इनमें सब में विटामिन ए, बीटा कैरोटीन वगैरह मिल जाता है। विटामिन B12, B6 के लिए हमारे लिए हम देखो मिल्क प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन करते हैं। अंतर मुहूर्त में दुहा हुआ दूध, मतलब जो तुरंत निकाला हुआ हो और उसे गर्म कर लिया तो 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। उसमें वह टोटली B12 का रेशो सबसे अच्छा पाया जाता है। दही छाछ अपने चांदी के सिक्का या नारियल के नरेटी से जमाते हैं, तो उसमें वह नेसेसरी जो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज है पूरी मिलती है। विटामिन B12 पूरा हो जाता है। सीरियल्स, फलियां हैं, फलियों को अगर हम कंज्यूम करते हैं, बन जाता है। बारिश से खेत की मिट्टी की क्वालिटी अच्छी है तो B12 अपने आप उधर के उस संपूर्ण प्रोडक्शंस में अच्छे आ जाते हैं। कनेक्शन ये इंटरनेट का थोड़ा अनस्टेबल हो रहा है, तो थोड़ा आवाज आप समझ लेना।
तो ये सब चीजें हमारे इसमें मिल जाती है। विटामिन सी के लिए जो हमारे नेसेसरी जितने भी साइट्रस फूड है सब में मिल जाते हैं। डी का मैंने सनलाइट बता दिया, नंबर 1 सोर्स है। इसके सिवाय फिर कैल्शियम ओरिएंटेड जितनी भी चीजें हैं, अखरोट गिरी है, जीरा है, अनार है, इसके सिवाय और भी चौलाई जो होती है उसमें ये है, उनमें भी अच्छा विटामिन डी या कैल्शियम मिल जाता है। और विटामिन ई के लिए अनेक प्रकार के अपने जो अखरोट में मिलता है, सोयाबीन में भी मिल जाता है। तो इस तरह से ये शाकाहारी सोर्स से सफिशिएंट चीजें सब मिल जाती हैं। और दूसरा ये है कि हमें जो अपनी लाइफ, बहुत छोटा स्पैन लाइफ का मिला है, कहाँ हमारे विदेश क्षेत्र में 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, ऐसे 1 करोड़ पूर्व की एवरेज आयु मिल रही वहां पर, और कहाँ हम यहाँ 60-70 साल में जा रहे हैं या 80-90 साल में। जैनों की एवरेज आयु 80 ईयर्स मानी जाती है। तो इस रूप में हमें खान पान आदि का कोई रस होना ही नहीं चाहिए। उचित खान पान न्यूट्रिशनल लेकर के आराम से, दया के भाव से और अच्छे सदाचार के पालन से, श्रावकाचार के पालन से हम स्वास्थ्य को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर सनलाइट का एक्सपोजर, उचित रूप से ऑक्सीजन इनहेलिंग करना, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, भ्रामरी, उज्जाई आदि, तो ये सब चीजें हमारी अपने आप में न्यूट्रिशनल हो जाती हैं। हम सिर्फ अन्न ही लेते हैं सो बात नहीं है, हम हवा लेना अच्छे से जाने, हम धूप लेना या सनलाइट लेना अच्छे से जाने, उचित रूप से मिट्टी का सेवन, मतलब बॉडी से टच होने के लिए मिट्टी का जो होना चाहिए, बिना स्लीपर या बिना चप्पल के आप खेत की मिट्टी में चलते हैं तो न्यूट्रिशनल अच्छा होता है। और इस रूप में ये हवा, पानी, मिट्टी, धूप, चारों चीजें, पानी पीने के भी तरीके होते हैं। छान करके अंतर मुहूर्त का 48 मिनट में उसमें ही आप सौंफ, जीरा या इलायची डाल लो तो आपका डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। इलायची से जिनकी गर्म तासीर है वो ठंडी तासीर के लिए इलायची बेस्ट है करने के लिए। जीरा डाइजेस्टिव होता है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल होता है। और तीसरा ये सौंफ वगैरह है, ये ठंडे तासीर की भी है, प्लस पाचन के लिए भी अच्छी रहती है। तो इस रूप में देखा जाए तो ये अनेक प्रकार से चीजें होती हैं जो हमारे जैन श्रावकाचार के अनुसार पानी की मर्यादा के लिए 6 घंटे तक की हो जाती है छानने के बाद ये डालने से, तो ये बॉडी के लिए न्यूट्रिशनल बन जाता है। तो इस रूप में काफी अच्छे से हमारे आगम में बहुत सारी चीजें दी हैं। आचार्य उग्रदित्ताचार्य ने कल्याण कारकम नाम का आयुर्वेद का ग्रंथ लिखा है और उसमें ये सब नुस्खे जैन पद्धति से प्रस्तुत किए हैं। इसके सिवाय और भी हमारे आचार्य आयुर्वेद के ज्ञाता ही थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम अपनी सदाचार युक्त श्रावकाचार की शैली से जीवन भर स्वस्थ रह सकते हैं और साथ ही अपने टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री जीवन से जो हम स्वाध्याय आदि की एक्टिविटी करते हैं, षट आवश्यक है ना, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम चेति ग्रस्तानाम, षटकर्माणि दिने दिने, ये 6 कर्म जो हम करते हैं, देव पूजा करना, गुरु की उपासना करना और स्वाध्याय की प्रवृत्ति रखना, दान देना, तो इससे जो एक अपने जितने भी पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोनल रेशो नॉर्मल रहता है। और जो स्पेसिफिक संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन के लिए डोपामाइन, सेरोटोनिन आदि ये ब्रेन में जो होने वाले पर्टिकुलर हार्मोन्स, इनका डेरिवेशन अच्छा होता है और स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो इस रूप में हमारे जीवन चर्या में जैन श्रावकाचार से शाकाहार मात्र से पूरी स्वास्थ्य की रक्षा होती है, सेटिस्फैक्शन रहता है और मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य हमें मिल जाते हैं। तो इस रूप में ये चीजें रहती है। ऐसे ऐसे रिसर्च हैं, आपके फॉरेन के रिसर्च होते रहते हैं कि भाई जिसने दूसरों के साथ में गांठ बांध ली, अर्थात वैर बांध लिया हो, उसे गठिया हो जाता है, जॉइंट पेन वगैरह जो अभी बता रही थी आप कोमल जी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वगैरह, ये सब चीजें होने का कारण मन में गांठ बांध रखी है। तो उस टाइप के ऐसी साइकोलॉजिकल अवस्था के कारण बॉडी में भी अवस्था बनती है। आप जिस प्रकार का सोचते हैं उस प्रकार के हार्मोन्स बन जाते हैं बॉडी में और उनका ड्राइनेस या उनका नेचर या टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है और बीमारियां होती हैं। इसलिए मन स्वच्छ और चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात मन की प्रसन्नता सदा रहनी चाहिए और वो स्वाध्याय के बल से आती है। तो हम तुम सब रेगुलर स्वाध्याय वगैरह करके और जैन सिद्धांतों से
आराम से स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं। 8 मिनट का समय है। अब किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी स्वास्थ्य से रिलेटेड या जैनिज्म से संबंध में, तो मैं समाधान करने में सक्षम हूँ, तो पूछ सकते हैं। तो अपना 8 मिनट का आप प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम कर सकते हैं। Try to use the icon, the hand icon, otherwise we might not be able to see who has raised the hand. Use the icon. चलो, किसी का प्रश्न नहीं है तो एक मैं खुद ही प्रश्न बना करके और उसका उत्तर भी प्रस्तुत करता हूँ। हमसे अक्सर पूछा जाता है कि भाई डिप्रेशन के केस वर्ल्ड में खूब तेजी से बढ़ रहे हैं, क्या रीजन है? अनुकूलताएं हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा है, खूब पैसे आ रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है, फिर भी डिप्रेशन में रहते हैं। इसका कारण ये है कि नकारात्मक अपनी थिंकिंग जो है, छोटी सी भी नकारात्मक बात होती तो हम उसको मन को लगा लेते हैं, उसी में झूरते हैं। हमारा जो आत्मा का स्वभाव है वो ज्ञान है। अब हम अगर कुछ जानेंगे तो वह इन घर गृहस्थी के विकल्पों में उलझने वाले उसी को जानते हैं, और जो स्वाध्याय करते हैं वो स्वाध्याय के विकल्प से निराकुल होते हैं, उससे टेंशन फ्री होते हैं। तो इसलिए हमारे पास मटेरियल चाहिए ज्ञान के लिए, ज्ञान ऐसे स्वाध्याय के माध्यम से ज्ञेय मिलते हैं जिससे मन निराकुल होता है। इसलिए यह हमें स्वाध्याय की कला से जानने देखने की कला मिलती है और उस संबंधी ज्ञेय रहते हैं, तो उससे हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। हाँ, ये आपने हैंड रेज किया रेडमी नोट 10 प्रो में। हाँ जी, पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए अपने आप को। हाँ जी, जय जिनेंद्र, मैं इंदिरा बोल रही हूँ सर। अच्छा, बोलिए इंदिरा जी। मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अपने जो फ्रूट्स का बताया ना कि फ्रूट्स खा मतलब लेना चाहिए, तो किस समय में लेना चाहिए? फ्रूट्स का टाइम क्या होता है? मतलब शाम को ले सकते हैं या नहीं ले सकते? 5-6 बजे करीब। और सलाद शाम को ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जरूर जरूर। देखो, इसमें ऐसा है कि आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है। हम तो एक सलाह देंगे कि भाई दोपहर के भोजन के, देखो वो चलता है ना नेचुरोपैथी के हिसाब से, बहुत सारे लोग बताते हैं, कोमल जी भी बताएंगी कि वो बोलते हैं कि भाई पहले जैसे विश्वरूप राय वगैरह के बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं, वो बोलते हैं जैसे भोजन कर रहे हैं तो उसके अपने बॉडी वेट के 10% आपको भोजन के पहले फ्रूट्स खाना है और बाद में फिर भोजन करना है। आयुर्वेद के हिसाब से हम इसको बोलते हैं कि आप कौन से फ्रूट्स खा रहे हैं, वो ठंडी तासीर के हैं या गर्म तासीर के हैं। सर्दियों में फ्रूट्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है क्योंकि ठंडक ज्यादा हो जाती है, तो बॉडी में उसकी डिमांड कम होती है। और गर्मियों में जो है रसीली चीजें, साइट्रस फूड वगैरह या बाकी जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी डिमांड बढ़ जाती है। गर्मियों में दिन बड़े होते हैं तो आप 5-6 बजे भी खा लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हम बोलते हैं देखो, अपना जैनियों का तो वैसे भी सूर्योदय के 1.25 घंटे बाद 48 मिनट बाद और सूर्यास्त के 48 मिनट पहले खान पान निपट जाता है। तो ये पूरे समय अग्नि अच्छी प्रदीप्त रहती है, तो जो भी आप खाएंगे सब डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। तो इसलिए आपको इसमें 5-6 बजे तक भी अगर आप कम क्वांटिटी में लेना चाहते हैं शाम के समय। अब जो रात्रि भोजन करते हैं ना, उनके लिए समस्या है कि शाम को साहब हमने फ्रूट्स खाए, ठंडक बढ़ गई और उससे फिर तकलीफ होती, तो रात्रि भोजन के लिए अपन समर्थन देते ही नहीं है। तो 5-6 बजे तक सूर्यास्त के 1.25 घंटे पहले तक आप फ्रूट्स खा सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कोमल जी भी इस बात पे अपना ओपिनियन देवे। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड ऑन इट कि जो शाम को अगर आप फ्रूट लेना चाहते हो तो शाम को स्वीट फ्रूट्स लीजिए आप। वो खट्टे फ्रूट्स शाम को मत लेना। और आपका प्रश्न ये था कि फ्रूट्स कब लेना चाहिए। बेस्ट टाइम होता है सुबह को लेना चाहिए, लेकिन अगर आप शाम को भी लेते हो तो जैसे लाइक बिटवीन 5 and 6 PM आप फ्रूट्स ले सकते हो। कोई और प्रश्न है? नहीं, जैसे कि मेरा पूछने का ये है कि मैं सिर्फ मतलब सुबह में भोजन बराबर से करती हूँ, शाम को थोड़ा हल्का फुल्का लेती हूँ थोड़ा सा कभी कभी, तो उसमें फ्रूट्स ले सकती हूँ क्या? मतलब ये पूछने का मतलब नहीं लेना चाहिए लाइक खाने के साथ, कि क्या होता है कि फ्रूट्स का डाइजेशन कैपेसिटी, आई मीन सॉरी, द टाइम फॉर डाइजेशन इज ओनली 2 hours।
2 hours 3 hours में वो फ्रूट डाइजेस्ट हो जाता है। और अगर आप रोटी लो या चावल लो तो उनसे क्या होता है कि रोटी चावल को लगभग 4-5 hours का टाइम लगता है। तो दोनों को मिक्स करेंगे ना तो इनडाइजेशन हो सकते हैं या गैस हो सकता है बॉडी में। तो दोनों को मिक्स मत करो। नहीं, जैसे सिर्फ फ्रूट्स ही लेना है या सलाद ही लेना है मुझे बस? तो फिर रोटी नहीं हाँ, लेती हूँ शाम को। शाम को तो मैं फिर रोटी आप नहीं लेती हूँ। लंच को, हाँ लंच टाइम इज द बेस्ट टाइम क्योंकि तब ऑप्टिमम डाइजेशन होता है। 5 से 6 बजे के टाइम पे ले सकते हैं ना फिर तो अपन? हाँ आप ले सकते हो, लेकिन अगर आप बेस्ट टाइम अगर आप पूछ रहे हो तो वो लंच टाइम है, लेकिन आप ओके। 5 या 6 बजे आप ले सकते हो। जी जी हाँ जी, थैंक्स। ओके। अस्मिता जी आपका और फिर बिनीता जी। अस्मिता जी अनम्यूट। जय जिनेंद्र। आपने जैसे बताया कि जो सिट्रिक फ्रूट्स हैं वो मॉर्निंग टाइम पे लेना चाहिए, बट सिट्रिक फ्रूट्स लेने पे जैसे बहुत बार गले में खराश हो जाती है या पेट में एसिडिटी बढ़ जाती है अगर मॉर्निंग टाइम पे लेते हैं, तो बिफोर डेट हम क्या ऐसा लें कि उसके बाद अगर हम सिट्रिक फ्रूट्स भी इंटेक करते हैं तो हमें उनके कोई ऐसे साइड इफेक्ट नहीं दिखे? ये एक्चुअली मुझे आपकी हिस्ट्री जाननी पड़ेगी, आपको क्यों एसिडिटी हो रही है, लाइक नंबर 1। तो ये तो बस एक जनरल ओवरव्यू था कि ये जनरल ओवरव्यू के हम इस टाइम से ये हम खा सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्सनल कुछ ऐसा इश्यू है तो बेटर आप पहले कंसल्टेशन करो और उसके बाद आप देखो, जैसे कि आप इंडिया में हो तो आप लाइक डॉक्टर दीपक से आप बात करो, लाइक पर्सनली बात करो तो फिर वो आपको थोड़ा गाइडेंस देंगे तो आपको एक प्रॉपर एडवाइस मिलेगी। जैसे अभी तो ना मैं जानती हूँ या ना वो जानते हैं आपकी पर्सनल हिस्ट्री क्या है, तो बेटर कि आप पहले किसी से बात करो तो फिर आपको। I have only a common question that before citric fruit, what can we intake? No, but it will not happen to most people. The thing is that it doesn't happen to most people. Most people don't feel acidity when they eat No, citric fruits. if we have no problem, that what we can intake before citric fruits, if we want to intake. There's nothing. I mean, if, like it is enough if you just take fruits. Fruits is a complete meal. You don't need anything. But if you want to eat, yeah, fruits is a complete meal. It has got all the like sufficient sucrose and even glucose enough. There's enough. So that is the mindset that we need to change. That fruit is a side meal, but it is actually a complete meal. Thank you. Okay. 1 second, Benita. Yes. Okay, people with high blood sugar, what fruits can they take? And is it okay for them to have a little of breakfast at around 10? Yeah, I mean, like I said, you see, this was just a general overview, but if it's a personal problem, one will need a consultation. But to try to answer your question that what fruits can a person with diabetes eat, is that there's a concept called glycemic index. Now, the higher the glycemic index, the faster it gives the sugar into the bloodstream. So we should be avoiding foods with a high glycemic index. For example, popcorn or any form of corn foods have got a very high glycemic index. If you compare white rice and brown rice, white rice has a higher glycemic index, so brown rice is better because it has a lower glycemic index. Coming to your question for fruits, what fruits now? Watermelon has got a larger quantity of water, so it is a better fruit for diabetic patients, because that is a better fruit because it has got more water content and it has a glycemic index. Obviously, from book to book or from website to website, it might differ a little bit, like these numbers might differ a little bit, but from the book I have referred to, it is showing that the glycemic index of watermelon is 24, so which is a very low index compared to maybe, just a second, compared to maybe sugar, which has a like white sugar, which has a glycemic index of 100, or even corn flour, which has a glycemic index of 100. So that's very high compared to watermelon. What about bananas? Bananas, again, it is a good fruit, but again,
for a diabetic patient, one needs to understand what actually is a problem, how much medication is taking. Only then we can give an answer. But banana as a fruit is a very good fruit. Yeah. Okay. Next, Suresh Pai, 1 minute. Yeah, my name is Suresh Shah from Nairobi, Kenya. My question was not a question actually, but a comment which first you handled this very well. Both of you have given us quite a bit of insight. One issue which worries us all the time is about pesticides used in our vegetarian food and fertilizers also at the same time. So getting organic products is quite difficult. Even here in Kenya, we used to have good food, but it seems suddenly the use of pesticides has increased, and it's happening all over the world. It's something which we don't know what's the solution, how we face this in the future while we still are going to remain vegetarians or vegan. I'm myself a vegan. In fact, my diet is, I had diabetes for 15 years and I reversed it with Dr. Nandita's classes in retreat in India. And for 7 years, I've been a vegan with oil-free and as much of organic as possible. And I'm on zero medication at this moment of any type. But main issue worrying is these pesticides and fungicides and all these medicines used. What are your comments? One way to curb it, because obviously we can't stop buying the vegetables from the shop, but once we bring it at home, one way to curb it is to soak it in soda bicarbonate and water. It might remove it to an extent. And in Kenya, we have the privilege that most people have got gardens. So whatever we can grow at home, we can grow to that extent. Of course, we can't grow everything. But that is another option, is to grow your own fruits and vegetables when it is possible. And where it is not possible, the option is that take soda bicarbonate and water, soak your fruits, vegetables in it, and like wipe it nicely, and it will remove a percentage of it. It might not remove 100%, but to a maybe larger extent, it might be able to remove the pesticides which have been used. Maybe Dr. Deepak can shed some experience on it. सही कहा आपने, इसको धोने से या फिर किसी प्रकार से इसको तुरंत ही यूज नहीं करके थोड़े देर धूप में रखने से भी जो विषारी तत्व या टॉक्सिक मटेरियल्स या पेस्टिसाइड्स के हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं वो लेस किए जाते हैं। तो इस रूप में इसकी स्टडीज मिलती है। अब जो पेस्टिसाइड है उसका पर्टिकुलर कोई एंटीडोट है, उसकी जानकारी हो तो उस रूप में उसे पर्टिकुलर वॉश करने के सिवाय दूसरा अल्टरनेट नहीं रह जाता है। तो आपने सोडियम बाइकार्ब का बोला है, और कोई पोटेशियम परमैंगनेट का भी बोलते हैं, और कोई बोलते हैं कि भाई सिंपल वाटर में ही थोड़ा सा सॉल्ट डाल दो, मतलब NaCl अपना जो खाने वाला सेंधा नमक है, तो उससे वह पर्टिकुलर जो भी कुछ उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं सरफेस पे रहने वाले। इस तरह से स्टडीज मिलती हैं। तो इतना ही मैं इस पे कहना चाहूंगा। Good. Okay. Hopefully it's helpful. Indeed, it is. Yeah, thank you. Okay, so I don't think there are any questions. One closing remark, I'm not sure in India if many Jains use honey, but I think in the Western countries and even in Africa, like Kenya, there's a usage of honey in the house. Now, let us just explain to you, according to Jain scriptures, what is honey, and then make up your own mind whether you want to use it or you don't want to use it, because it is ranked it is ranked as bad as eating meat. Honey is it is in that category that honey is that bad. So honey is actually an excrete of bees, meaning it is the stool, mucus, the urine. It is that is what is honey. That is actually what is honey. So if it can be avoided for any skin treatments, because even in skin treatments honey is used widely, and it is even used for coughs, colds, honey is used. So if it can be avoided, instead, if you eat tulsi or mint leaves with, like lemongrass, which grows so widely in Kenya and even in other parts of the world. So these are better options, because honey is ranked in that category. It is as bad as eating meat. And we will leave it to you to decide if you want to build that extra karma or not. Yeah.
Okay, so that's the final remark. And thank you, Dr. Deepak. He has a class, so we will not take much of your time. Thank you very much, everybody. We would like to thank the audience. Once again, on Monday evenings, we've got adult classes. If anybody wishes to learn about soul, feel free to contact me, feel free to message me right now, and we can share with you the details. Dr. Deepak is even hosting a few classes, which he will be happy to share with you, the classes that he's sharing. And all our classes are free of cost. There is no cost at all. Come and learn, and we will be happy to share with you the little that we know. Thank you, and Jai Jinendra.